अस्सलाम वालेकुम। हल्का है रूमी और इकबाल में खुश आमदेद। Welcome to Iqbal and Rumi Circle. In this particular session, I'll use English as well as Urdu languages to describe 3 or 4 verses from Allama Iqbal's poetry and try to make a case that Islamic spiritual poetry had a large part to play in actually transmitting the message of Islam into the general public. Those people who are into spirituality and those people who can connect to this particular kind of a uh, message system, poetry, they can actually feel the impact that it has in transforming your life and your approach to life. मैं इस हल्के से छोटे से सेशन में उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों को इस्तेमाल करके इकबाल के कलाम से कुछ अशआर आपके सामने पेश करूँगा, जिससे ये ज़ाहिर करना है कि शेर के अंदर वो क़ुव्वत है, वो ताकत है कि इंसान के ज़हन पे, दिमाग पे इतना असर करता है जो बड़ी लंबी किताब भी अगर आप पढ़ लें तो शायद वो आपको हासिल ना हो सके। इसीलिए आप देखते हैं कि अक्सर खुतबात में, इस्लामी मसाजिद में और इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें ख़तीब जो हैं या जो उस वक्त आपके सामने बयान कर रहे होते हैं उलमा, वो अशार का सहारा लेके अपना पैगाम जो है वो चंद अल्फाज में आसानी से पेश कर सकते हैं। तो मैं पेश करता हूँ पहले उर्दू में और उसके बाद उसका उर्दू आसान तर्जुमा और उसके साथ इंग्लिश में आसान तर्जुमा आपके सामने पेश करूँगा। मैंने बाल जिब्रील में से 3 या 4 अशार मुंतखब किए हैं। ये साकी नाम मस्जिद कुर्तबा इस नज़्म का नाम है। इसमें कुल 64 अशार हैं और उसमें से मैं 35वां, 36वां और 29वां शेर 35th, 36th एंड 39th ये शेर आपके सामने पहले पेश करूँगा, फिर इसका उर्दू में मफ़हूम, उसके बाद इंग्लिश में सिंपल ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। इकबाल कहते हैं, हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरीं, कार कुशा कार साज, और खाकी व नूरी नेहाद बंदाए मौला सिफात, हर दो जहां से गनी इसका दिले बेनियाज, और नुक्ताए परकार हक मर्द खुदा का यकीन, और ये आलम तमाम वहमो तलिस्मो मजाज। ब्यूटीफुल। हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ, आसान है। गालिब वो होता जो डोमिनेंट हो, जो यानी कि कहते हैं गालिब आ जाए, जीत जाए, किसी चीज़ को फतह कर ले। कार आफरी, अच्छे अच्छे काम करने वाला, काम अच्छे जो है उनको तलाश करके जो मुफीद काम है इंसानियत के लिए वो करने वाला। कारकुशा वो होता है जो मुश्किल काम, मुश्किल गुत्थियाँ सुलझाने वाला हो, उसको कारकुशा कहते हैं। मुश्किल काम को भी आसान करके कर दिखाने वाला है, वो है वो बंदा है मोमिन का हाथ। और फिर क्या है, कारसाज, अगर कोई बिगड़ा हुआ काम हो तो उसको भी ठीक कर सकता है। क्या करता है, अच्छे काम खुद करता है। अगर कोई काम मुश्किल नजर आए तो उसको आसानी से कर लेता है, अगर कोई काम बिगड़ा हुआ हो तो उसको भी सही कर लेता है। खाकी और नूरी नेहाद, ये है खाकी यानी कि बना हुआ तो खाक से है, लेकिन नूरी नेहाद इसका जो असल है वो नूर है। बंदा है मौला सिफात, इसके अंदर अल्लाह की सिफात की झलक नज़र आती है। ये अल्लाह के जो सिफात हैं, जैसे करीम है, रहीम है, गुफ़ार है, गफूर है वगैरह, वो सारी सिफात बंदे के अंदर भी झलक उनकी नज़र आती हैं। मौला सिफात इसका मतलब है हर दो जहां से गनी। गनी ये है कि पला हुआ है, यानी इसके अंदर चीज़ें जो आई हैं, जो इसके अंदर सरमाया है वो हर दो जहां से लिया गया है। और इसका दिल बेनियाज, इसका जो दिल है वो अपने लिए ये नहीं, वो उसका सेल्फ इंटरेस्ट कुछ नहीं है, वो बेनियाज है हर चीज़ से, उसको किसी चीज़ की हाजत नहीं है, लेकिन इसके पास ऐसा सरमाया है जो इसने
ہر دو جہاں سے, اس دنیا سے بھی اور دین سے بھی اور آخرت سے بھی لیا ہے. اور نقطہ پرکار حق, نقطہ فوکل پوائنٹ کو کہتے ہیں جہاں سے چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے. پرکار حق, پرکار از دیٹ تھنگ جو جس سے جو اللہ جو ہے اپنے کام جو ہے اس کی وسعت کو متعین کرتا ہے. یعنی نقطہ پرکار حق, اللہ سب العزت کا جو کارسازی ہے اس کا فوکل پوائنٹ, اس کی نقطہ یہی ہے. یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے مرد خدا کا یقین. یعنی کہ جو مرد مومن ہے اس کا جو فیتھ سسٹم ہے, جو اس کا یقین ہے, اسی سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وسعت کا تعین کرتا ہے. یعنی کہ اللہ بندے کی جو ضروریات ہیں ان کو دیکھنے کا اس کے حساب سے پھر یہ ہے اس کے لیے ہر چیز جو ہے اس کے ارد گرد پیدا کرتا ہے. اور یہ عالم تمام, اور یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا اور کائنات, وہم و طلسم و مجاز, یہ وہم ہے, یہ آپ کا امیجنیشن ہے. طلسم ہے, ایک جادو قسم کی چیز ہے آپ کے سامنے. مجاز, اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے, یعنی کہ یہ بالکل عارضی قسم کی چیز ہے. انسان کی جو قابلیت ہے اور انسان کی جو وسعت ہے, انسان کی جو طاقت ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے. ان ادر ورڈز, جو مرد خدا کا یقین ہے, اور جو مرد مومن, جو مرد کامل ہو جاتا ہے, اس کا جو فیتھ سسٹم ہے وہ اسی سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے لیے, انسان کے لیے ہر چیز تیار کرتا ہے. اور انسان کی جو قابلیت ہے وہ آپ کے سامنے جو یہ عالم تمام نظر آ رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ وہم ہے, یہ طلسم ہے, یہ جادو ہے, اور یہ ایک مجاز ہے, یہ ان ریئل چیز ہے. اب اسی کو اگر میں انگلش میں کہوں تو یہ کہوں گا, ہاتھ ہے اللہ کا, ہینڈ آف دا مین ہیومن, ہاتھ آف اللہ دا ڈیوائن ہینڈ از بندہ مومن کا ہاتھ, اٹس دی ہینڈ آف اے بلیور. غالب و کار آفری, ڈومیننٹ اینڈ doing good deeds, doing marvelous accomplishments. Kar kusha is actually fixes things that are broken. Any deed any activity that may not be right, it can fix it. Kar saz, it can actually more or less make things happen for you, around you. Khakio nuri nihad, it's made out of clay, and yet its inner nature is made of light or nur. Bandaye Maula Sifat, it has the characteristics of the divine in him. It has the ability to do things that are really the characteristics of the divine. Allah subhanahu wa ta'ala does things that are of course done by him, but by his permission man can show some reflection of what Allah subhanahu wa ta'ala does. Har do jahan se ghani iska dil be niyaz. The heart of a human being is really it's being served by the entire creation, and yet it has no real need to beg for anything. It basically is delivered all those things by itself, and it does not really need anything from this world to accomplish what it can do by itself. And then nuqta parkar haq, Mard Khuda ka yaqeen. Actually, the focal point of all the divine things that are happening around us is based on the faith system of a perfect man, perfect human being. Aur ye alam tamam wahm wa tilism wa majaz. And all this universe that you see is really in a temporary, transitory, imaginary thing. Looks like mesmerism, looks like a magic, looks like not real but imagined things, because all of this is transitory, and humans have the ability to transcend. And after this universe is over, after this world is over, even then a Mard Kamil will continue to stay with Allah subhanahu wa ta'ala and have a life that is persistent. Now this kind of a message, I mean, in a future session sometimes I might say, when Allah subhanahu, when Iqbal says about our beloved Prophet, who is a perfect man, he says that Law bhi tu, kalam bhi tu, tera wajood, al-kitab. Or
Gumbad Abgina Rang, Tere Mohit Me Hibab, there describing the personality of a perfect man, our beloved Prophet. Iqbal says that you are the tablet, you are the pen that writes on it, the divine tablet he's talking about. Uh, and you are actually the message of Allah subhanahu wa ta'ala. And Gumbadya Bagina Rang, this blue colored sky that is around us, Tere Mohit Me Hijab. In your circumference, this is like a bubble. He talks about the status of our beloved Prophet, that your personality extends so far beyond this universe that we see that only Allah subhanahu wa ta'ala knows what your true stature is. Inshallah, we'll talk about that in a future session. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum.